मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सितारा नूर साहबा। आप रिसर्च स्कॉलर हैं, अभी हाल ही में आप रिसर्च फेलो थी हार्वर्ड बेलफर सेंटर में। उसके अलावा आप रिसर्च फेलो रही हैं वियना सेंटर फॉर डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन में, सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ में बड़ा काम करती रही हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू मैडम। अक्सर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के हवाले से साउथ एशिया में, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इस हवाले से लिखा है फॉरेन पॉलिसी में, अल जज़ीरा में, बहुत सारे रिसर्च का आपका काम है। अक्सर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के हवाले से। एक दफ़ा मैं एक पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ को सुन रहा था आज से 6-7 साल पहले। उन्होंने कहा जी कि जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हैज़ बीन अचीव्ड। अभी रिसेंटली दोबारा डिस्कशन शुरू हो गई है जी कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है वो नहीं है। आप कैसे देखती हैं कि क्या पाकिस्तान समझता है कि साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है, या कि आप समझती हैं कि स्टिल बिकॉज इंडिया को जो एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है काफ़ी देर से, उससे स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है वो नहीं है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? थैंक यू कमर फॉर हैविंग मी। आई थिंक ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी एक प्रोसेस का नाम है, जिसे हम कहते हैं कि दिस इज़ अ प्रोसेस नॉट एन एंड गोल। क्योंकि सिचुएशंस आप देखें इंडिया पाकिस्तान के दौरान ख़ासतौर से अगर हम देखें तो एक बहुत ही इवॉल्विंग सी सिचुएशन है, कोई स्टैटिक सूरत हाल नहीं है। मतलब हमारा कंपटीशन दोनों स्टेट्स के अंदर चल रहा है। तो अगर हम देखें कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अचीव हो गई है या नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले यू नीड टू सी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन द फर्स्ट प्लेस, राइट। तो अगर हम न्यूक्लियर डिमेंशंस के अंदर बात करें तो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी एसेंशियली refers to a country's ability to effectively strike back after absorbing the first strike by the adversary। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी का एक एहसास होना ज़रूरी है, ताकि एक स्टेट दूसरी स्टेट के ऊपर एक डिसआर्मिंग फर्स्ट स्ट्राइक की अटेम्प्ट ना कर पाए। बेसिकली दोनों सिचुएशन, दोनों स्टेट्स के दरमियान सूरत हाल ये होनी चाहिए, या एक ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो दूसरे स्टेट को विद एन अटैक विद न्यूक्लियर वेपन्स दे कैन नॉट रियली डिफीट देम। So that concept creates a bit of a sense of strategic stability। अब हम अगर उसको ब्रेक डाउन करें थोड़ा सा, उसकी डिटेल्स में जाएं, तो उसके अंदर 3 एलिमेंट्स और आ जाते हैं स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो कि इंश्योर कराते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्ट्राइक स्टेबिलिटी। ये डिफरेंट स्कॉलर्स ने, वेस्टर्न स्कॉलर्स ने इसके ऊपर लिखा है। फर्स्ट स्ट्राइक स्टेबिलिटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि बिकॉज सिंस आपकी अंडरस्टैंडिंग है फर्स्ट स्ट्राइक कॉन्सेप्ट्स के अंदर कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट पर फर्स्ट अटैक करने में कोई दे डू नॉट सी अ वैल्यू इन अटैकिंग द अदर स्टेट एज अ फर्स्ट स्ट्राइक। अब कोल्ड वॉर के दौरान फर्स्ट स्ट्राइक स्टेबिलिटी टू एन एक्सटेंट हासिल हो गई थी यूएस एंड फॉर्मर सोवियत यूनियन के दरमियान, क्योंकि उन्होंने अपने सर्वाइवेबिलिटी ऑफ एसेट्स को इंश्योर कराया हुआ था। जो दूसरा एलिमेंट आ जाता है स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को इंश्योर कराने में, वो है क्राइसिस स्टेबिलिटी। क्राइसिस स्टेबिलिटी more or less is closer to first strike stability, जिसका मतलब ये है कि in simple terms it means that absence of incentives to use nuclear weapons first in a crisis। और तीसरा एलिमेंट जो आ जाता है स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के अंदर, वो है आर्म्स रेस स्टेबिलिटी, जिसका मतलब बेसिकली ये है कि दोनों स्टेट्स के दरमियान एक आर्म्स रेस और टू बिल्ड अप न्यूक्लियर फोर्स और इंक्रीज न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर हम ये तीनों एलिमेंट्स साउथ एशिया की सूरत हाल के ऊपर इनको अप्लाई करें, तो हमें मोर और लेस नज़र आता है कि तीनों एलिमेंट्स थोड़ा डिस्टेबलाइज्ड लेवल के ऊपर है। अगर हम देखें फर्स्ट स्ट्राइक स्टेबिलिटी, तो रिसेंटली हमने ये सुनना शुरू किया है कि इंडिया का एक नो फर्स्ट यूज़ का ऑप्शन तो उन्होंने एलानिया तौर पे अपना एक वो रखा हुआ है, लेकिन अगर हम उसकी डिटेल्स में जाएं या थोड़े ट्रेंड्स ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स इफ वी एनालाइज, वी कम टू नो दैट that sense of no first use is a bit of eroding, and Pakistan didn't have a confidence in that NFU in the first place anyway, but over the years some statements have come which essentially refer to a situation where India is no more following an NFU। तो वो first strike stability, crisis stability दोनों थोड़े से shaky grounds के ऊपर है, and same goes with the arms race stability, in which we see there is a massive increase in the conventional as well as the military build up in the both states। So looking from that perspective, I think strategic stability in South Asia is in a very precarious situation, to say the least.
अच्छा मैडम, आपने बात की क्राइसिस स्टेबिलिटी की, फर्स्ट स्ट्राइक स्टेबिलिटी की, देन क्राइसिस स्टेबिलिटी की बात की। तो फॉर एग्जांपल इन केस जब इंडिया ने बालाकोट पे अटैक किया, मैं जस्ट मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन ये आता है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसने उसके ऊपर साइलेंस की या इंडिया की सपोर्ट की? तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर मज़ीद सिचुएशन वोलेटाइल हो सकती है जब इंटरनेशनल कम्युनिटी इस तरह की चीज़ों को जो है वो रिकॉग्नाइज़ ही ना करे या किसी एक स्टेट के पलड़े में डाल दे कि हाँ जी, जो इन्होंने किया है वो सही किया या इस तरह की चीज़। सो आप क्या समझती हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इससे कितना मज़ीद अनसर्टेनिटी या मज़ीद क्राइसिस क्रिएट हो सकता है? इसमें आपका क्या व्यू है? बिल्कुल। देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो कि 2019 में पुलवामा बालाकोट क्राइसिस के दौरान सामने आया। और ये पैटर्न, इवन अगर हम शुरू से पोस्ट न्यूक्लियराइजेशन इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल सिचुएशन देखें, जितने भी क्राइसिस आए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्विन पीक क्राइसिस ऑनवर्ड्स, मुंबई क्राइसिस, पठानकोट क्राइसिस, इन सब के अंदर वन एलिमेंट दैट प्लेड a significant role in stabilizing the situation was a third party role. So, in a way, India Pakistan has the outsourced crisis management to international third parties, which is quite dangerous considering the situation that the, the, the ability of a third party to intervene during a crisis may vary. अगर हम ये देखें कि स्पेसिफिकली ये एलिमेंट 2019 के क्राइसिस के दौरान बहुत वाज़े तौर पे नज़र आया, जब पाकिस्तान की तरफ से बहुत से स्कॉलर्स का ये ख्याल था कि यूएस ने इंडिया को फेवर किया। स्पेसिफिकली अगर जॉन बोल्टन की स्टेटमेंट्स अगर आप देखें कि इंडिया हैज़ द राइट टू सेल्फ डिफेंस, टू द इफेक्ट कि इंडिया का जो एक्शन था ऑन बालाकोट के अंदर, उसको इन अ वे सपोर्ट किया, राइट? और वो जो थर्ड पार्टी का रोल शुरू से नज़र आता था 2002 के क्राइसिस में या 2008 के क्राइसिस में, वो वाला उतना प्रोएक्टिव रोल क्राइसिस के शुरू में मिसिंग नज़र आया। तो इससे क्या वाज़े होता है कि हमारे यहाँ दोनों ममालिक के दरमियान एक जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है स्टेबिलिटी के लिए, वो होता है एस्केलेशन कंट्रोल मैकेनिज्म। अनफॉर्चुनेटली वो एस्केलेशन कंट्रोल मैकेनिज्म बायलैटरली इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मौजूद नहीं है, और या उस तरह से इफेक्टिव नहीं है जिस तरह से उनका रोल होना चाहिए। कोल्ड वॉर के दौरान अगर हम देखें क्या डिफरेंशिएट करता है इन करंट सिचुएशन को कोल्ड वॉर से, दिस इज द वन स्ट्राइकिंग एलिमेंट कि यूएस एंड सोवियत यूनियन रियलाइज्ड way early, specifically after the Cuban Missile Crisis, that they need to have some escalation control mechanism, they need to have some de-escalation or both and confidence building measures among the two. So वो escalation control mechanism वाला जो element है वो missing है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, which is very dangerous, and we have literally given the responsibility of the third party to intervene, और वो third party element जो था वो it was either missing और was not as effective, क्योंकि third party के लिए बुनियादी शर्त ये होनी चाहिए कि वो उसका रोल न्यूट्रल हो for both sides। लेकिन पुलवामा के अंदर बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि यूएस का रोल जो था वो वाज़े तौर पे इंडिया के फेवर में जा रहा था, considering although American analysts say that US involvement was there from the very beginning, लेकिन politically perhaps we did not see that happening, or visibly we did not see that happening. So that was one element which brought both countries bit closer to a nuclear risk. Although दोनों countries ने बहुत restraint का मुजाहरा किया, more than India, पाकिस्तान ने restraint का मुजाहरा किया, लेकिन अगेन वो सूरत हाल फिर वाज़े तौर पे सामने आती है कि क्या हम एक न्यूक्लियर स्टेबिलिटी या न्यूक्लियर रिस्क के इस माहौल में कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं जो कि हम ले सकते हैं रिस्क को कम करने में? बिकॉज इफ यू जस्ट इमेजिन, आपने एक इंडियन पायलट को गिरफ्तार कर लिया, जो कि अरेस्ट कर लिया, और उसके बाद आपने उसको दिस सर्व्ड एज एन ऑफ रैम्प, it was just a stroke of luck that pilot got captured alive. Had it not been captured alive, probably the situation would have been different. Or considering कि किस तरह से saber rattling was initiated from the Indian side, specifically nuclear-related threats Indian side से आई in the very beginning of the crisis, that's a very alarming situation. बिल्कुल ठीक हो गया। मैडम, आपने अपने आर्टिकल में लिखा है कि अमेरिका और चीन का जो कॉम्पिटिशन हो रहा है,
वो ज़ाहिर बात है वो चाइना और इंडिया के ऊपर भी इन्फ्लुएंस कर रहा है और हमारे ऊपर भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप कैसे देखती हैं कि ये जो इंडिया की जो कन्वेंशनल मिलिट्री सुपीरियॉरिटी है, हाउ कैन पाकिस्तान बैलेंस इट? आपको लगता है कि ये जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है ये बैलेंस कर सकती है? क्योंकि आई रोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान भी अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइज़ेशन में जा रहा है, जी हमने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाए ताकि ये जो अगर थ्रेशोल्ड को हम मज़ीद नीचे करें ताकि इंडिया अटैक ना कर सके या इस तरह की सिचुएशन ना बढ़ सके। तो ये जो कन्वेंशनल मिलिट्री सुपीरियॉरिटी है इंडिया की, आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान को इनसिक्योर करती है या पाकिस्तान हैज़ सफिशिएंट मैकेनिज़्म, जिस तरह की आपने बात की कि जी थर्ड पार्टी या एस्केलेशन कंट्रोल मैकेनिज़्म नहीं है। तो लेकिन दुनिया जो है आजकल वो इस खित्ते को इतनी अटेंशन नहीं दे रही इंडिया पाकिस्तान को, वो समझ रहे हैं बड़े नॉर्मल मुल्क हैं। लेकिन जो कन्वेंशनल मिलिट्री सुपीरियॉरिटी है इंडिया की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसको आप कैसे देखती हैं विज़ा-वी पाकिस्तान जो है ये न्यूक्लियर या मिसाइल हमारा प्रोग्राम इसको बैलेंस कर पाएगा या कर पाता है? इसकी हमें काइंडली कुछ बताएँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कि इंडिया और पाकिस्तान की जो डिफेंस स्पेंडिंग है, देयर इज़ अ ह्यूज डिस्पैरिटी in the defense spending of the two countries. India stands somewhere $72 billion, whereas Pakistan stands at meager $10 billion. So conventionally, I think there is no possibility that Pakistan can match India on the conventional side. And I think यही वो वजह थी कि पाकिस्तान चूंकि कन्वेंशनली इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता था, यही वजह है कि पाकिस्तान ने in the first place nuclear program को शुरू किया during the 70s after the 71 war. ये realization तब से ही exist करती थी और लेकिन उसके बाद ये बात आपकी दुरुस्त है कि अगर when the conventional asymmetry increases, the risk of nuclear weapons in production of nuclear weapons in a war increases क्योंकि nuclear threshold थोड़ा lower चला जाएगा। ये रिस्क डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है और उसको लिंक करूंगी मैं आपके सवाल के शुरू में, जैसे आपने कहा कि जो रीबैलेंसिंग हो रही है इन द रीजन विद द ग्रोइंग हॉस्टिलिटी बिटवीन और द ग्रोइंग कंपटीशन बिटवीन द यूएस एंड चाइना, उसका भी इंडिया जो है वो नेट बेनिफिशियरी है इन द सेंस कि पिछले 15 साल के दौरान सिर्फ 15 साल के दौरान इंडिया को जो यूएस की तरफ से इक्विपमेंट मिला है, दैट इज मोर देन ऑलमोस्ट $20 billion of equipment that India has received. और besides that, इंडिया ने बहुत से डिफेंस एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किए हैं इंडिया के यूएस के साथ, जो कि जिसमें बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट शामिल है, जियोस्पेशियल एग्रीमेंट कोऑपरेशन एग्रीमेंट शामिल है, एंड मोस्ट रिसेंट लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट शामिल हैं, जो कि 2016 से 18 के दरमियान 2020 के दरमियान साइन हुए। ये सारे एग्रीमेंट as per the discussions are against strengthening Indian position against China. लेकिन by default ये पाकिस्तान को मज़ीद insecure करते हैं, because in the case of war हमने जैसे कि अभी recent past में भी देखा कि, और ये बल्कि पेपर में भी अंदर मैंने लिखा कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि when we talk about security situations between India and China versus India and Pakistan, ये बहुत डिफरेंट वो चीज़ें हैं, बिकॉज इंडिया और चाइना के दरमियान न्यूक्लियर एलिमेंट उस तरह से सामने नजर नहीं आता जिस तरह स्ट्रांगली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नजर आता है, प्राइमरली बिकॉज not just nuclear deterrence exists between India and China, but also there is the economic interdependence, which serves as a deterrence element, because India and China do not, despite increasing hostility on the borders, despite challenges on the post-Doklam and even in the recent past, I think there is no risk of or no nuclear flashpoint as such between India and China. But on the contrary, whatever capability India acquires against China, or purportedly as a net security provider that US is trying to portray India as such, that would go, or that would rather destabilize equation between Pakistan and India to a greater extent. तो उससे जो आपने कन्वेंशनल एसिमेट्री की बात की, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, which increases Pakistan's reliability more on nuclear weapons. और nuclear weapons पाकिस्तान को एक तरह से वो उसको, I mean, the spending on conventional weapons is way more
then Pakistan has to spend on the nuclear weapons. So economically, it's more beneficial or more, you can say, a reliable deterrent as compared to conventional, because Pakistan cannot match conventional. अच्छा मैडम, आपने जिक्र किया बैलेंस ऑफ टेरर का कि देयर इज़ अ फ्रेजाइल बैलेंस ऑफ टेरर जिसकी वजह जो कि मज़ीद चैलेंजेस लेके आ रहा है, जिसमें न्यूक्लियर पोस्चर्स इवॉल्व हो रहे हैं, रीजनल पावर कंपटीशन की बात की है आपने, या आपने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की भी बात की है। वेयर डज़ पाकिस्तान स्टैंड्स इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी? बिकॉज़ जैसे आपने बात की कि इंडिया इज़ ऑलरेडी गेटिंग अबाउट उन्होंने $20 अरब का वेपन लिया है, फिर बहुत सारे 2+2 डायलॉग अमेरिका इंडिया के हो रहे हैं, हर जगह पे उनको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में अभी हाल ही में एक यूएसआईपी की भी रिपोर्ट भी आई थी कि पिछले 50 साल से पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा असला चाइना से खरीद रहा है। तो हम एक वो रिपोर्ट का आई थिंक नाम था द थ्रेशोल्ड अलायंस, कि वो बनने जा रहा है। आप क्या समझती हैं कि ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इफ़ इट इज़ अफेक्टिंग द बैलेंस ऑफ टेरर, वेयर डज़ पाकिस्तान स्टैंड इन टर्म्स ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी? क्या हम मैच कर पाएंगे? दुनिया में हमारे लिए कोई रास्ते खुले हुए हैं, या कि वी हैव नो चॉइस बट टू गो टू चाइना? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको ये देखने की ज़रूरत है कि what is the debate around the emerging technologies. When we talk about emerging technologies, we are talking about a range of technologies, which includes cyberspace, which includes lethal autonomous weapons, quantum computing, and a lot of stuff like that. And comparing India and Pakistan on that front would be, I think, both countries are at a very initial stage when it comes to competing in that category, because अभी ये debate जो है वो global level के ऊपर है कि do the countries actually need to employ emerging technologies to a greater extent in the existing strategies and stuff. So that's a separate debate, and उस debate के ऊपर पाकिस्तान की position essentially on the lethal autonomous weapons, for instance, ये है कि these lethal autonomous weapons should not be employed by any state, because once lethal autonomous weapons, or specifically technologies of this kind, are employed in a warfare, they change the context of warfare to an extent where the existing norms and values and rules would not apply. So that's a very, very dangerous situation we are embarking on. So Pakistan's position on the lethal autonomous weapons specifically is that they should not be employed. But having said that, Pakistan is aware that India is developing or venturing into lethal autonomous weapons as well. And once you are venturing into it, they are definitely going to employ that. So that is going to be a very dangerous situation for strategic stability overall. And then comes to, if you talk about the cyberspace or the employment of, reliance on cyber-related systems, I think that becomes inevitable, considering your communication setup, most of your equipment is going to be based on cyber-related stuff. And it is very important that countries ensure cyber security, because breaching becomes very important, very, very easy if you are relying on cyber-related platforms. उस हवाले से I think दोनों ममालिक के दरमियान competition चल रहा है, but that's an evolving situation, and that's definitely going to add another layer of insecurity or instability in the broader debate of strategic stability. अच्छा मैडम, एक छोटा सा क्विक क्वेश्चन एंड देन मैं फिर एक आखिरी स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रजीम पे आना चाहता हूँ। ये जो अक्सर हम सुनते हैं जी, पाकिस्तान के इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंडिया के इतने, कभी सिपरी, कभी कोई कर देता है। आप, क्योंकि आपकी बड़ी एक्सटेंसिव स्टडी है, आप अभी हार्वर्ड में भी बड़ा ज़बरदस्त काम करके आई हैं फॉर 1 ईयर। ये इसकी क्या क्रेडिबिलिटी होती है? क्योंकि हमारी तो मेरा ख्याल है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी किसी को नहीं पता, न्यूक्लियर प्रोग्राम वेपन्स कहाँ से किसी को पता चलेगा? तो ये क्या होता है? ये थ्रेट मैट्रिक्स को मेजर करते हैं? ये किन इंडिकेटर्स की बेस पे ये समझते हैं कि जी पाकिस्तान के पास 20 से एक ज़्यादा और इंडिया के पास 20 से कम है? देखिए, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है कि हाउ एक्यूरेट दोज एस्टिमेट्स आर इन द फर्स्ट प्लेस, एंड व्हाट आर द डिटर्मिनिंग एलिमेंट्स. अब सिपरी और डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो इस हवाले से नंबर्स ला रहे हैं, या वो एक डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान इज इंक्रीजिंग इट्स फिसाइल मटेरियल प्रोडक्शन टू अ मैसिव लेवल, दोज आर बेस्ड ऑन some of the information from different sources of information, and that information is collected and then some estimates are made.
उसके अंदर पाकिस्तान की डिबेट और पाकिस्तान का क्वेश्चन हमेशा से ये रहा है कि a number of articles, Mansoor Ahmed has written extensively on how there are three different streams of nuclear, uh, uh, nuclear production in India, in which one is safeguarded civilian nuclear infrastructure, then one is military infrastructure, which is unsafeguarded, and then there is unsafeguarded civilian infrastructure, which is not accounted for. And then there are breeder reactors, which also, sort of create more material. So Pakistan has always stated that the estimates of fissile material regarding India are very conservative, whereas estimates about Pakistan are rather inflated. तो ये डिबेट चलती रहेगी, लेकिन आई थिंक उस डिस्कशन से ये जाहिर होता है कि एक मुल्क का न्यूक्लियर प्रोग्राम किस तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, और इसके अंदर कोई भी डेफिनेटिव आंसर किसी भी इंस्टीट्यूट या उसके पास नहीं होगा, बिकॉज दीज आर जस्ट एस्टिमेट्स. एंड एज पाकिस्तान कीप्स ऑन सेइंग दैट देयर आर number of elements in India's nuclear program which do not get as much attention as probably they should be. But the crux of the matter is that there is an ongoing competition. और जैसे अब रिपोर्ट्स आ रही हैं इंडिया के हवाले से कि इंडियाज न्यूक्लियर doctrine is transforming or changing to more towards counter force strikes. अगर ये रिपोर्ट्स जो कि इसके ऊपर क्रिस्टोफर क्लैरी की और विपिन नारंग की डिबेट्स के आर्टिकल्स आए हैं इसके ऊपर, और बहुत लंबे अरसे से ये डिबेट चल रही है, और इंडिकेशन सजेस्ट दैट इंडिया इज एक्चुअली मूविंग ऑन टू दैट डायरेक्शन, और उस हवाले से उनको एक मैसिव इंक्रीज करना पड़ेगा अपने आर्सेनल. कहाँ तक वो पॉलिसी कामयाब होती है और पाकिस्तान उसके जवाब में क्या करता है, वो ऑफ कोर्स एक डिफरेंट डिबेट है. Or definitely Pakistan is taking into consideration whatever news is coming from the Indian side and ensuring that it has, sort of response to that. Lekin that brings us to the question that how, problematic this, moving on that path, how problematic it can be. Because first of all, we are getting into, venturing into, uncharted territories. Specifically considering the fact that हमारे कोई bilateral escalation control mechanism do not exist, reliance on third party for crisis control and crisis management that we have relied for so long has now started showing its limits. Already has started showing its limits. तो उस तरह की situation में, और even besides that, considering how strategic cultural dynamics has changing in India, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि न्यूक्लियर की सारी थ्योरी ही बेस्ड ऑन रैशनैलिटी. अगर एक इंडियन लीडरशिप, जिस तरह के हमने रीसेंट पास्ट में भी देखा, पुलवामा बालाकोट क्राइसिस के दौरान भी देखा, कि फॉर द पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग दे इंक्रीज्ड द थ्रेट लेवल टू अ वेरी greater extent, which was probably not necessary at that time, but they thought probably it would be beneficial for some political gains, because that was those threats were delivered on the election campaign trail. तो ये सारे element combining them together, I think एक कोई बहुत positive picture सामने नहीं आती है. और this brings us back to the discussion, जबकि आपने सवाल में भी पूछा कि इन मसाइल को हल करने के लिए is this the right path to go forward, और या हमें एक we need to transform how we deal with the situations. Because I also keep on saying that 2019 Pulwama Balakot crisis could have been India-Pakistan's Cuban Missile Crisis moment, in which both states should have realized that we have come too close to, sort of a nuclear risk environment, and there definitely is some need to do some introspection and do some risk assessment and do some bilateral, engagement, in which countries would try to find ways to, lessen the temperatures. Lekin unfortunately, this did not happen. On the contrary, we have seen rather that there are more of hardened positions, specifically on Indian side, Pakistani side maybe, but more on the Indian side. And that does not really portray, a good picture as moving forward. So definitely, I would link it with what you asked about the, strategic restraint regime which Pakistan has been proposing
for quite so long. I can elaborate. बिल्कुल इसमें एक अच्छा ये बताइए कि एक आखिरी इसको ज़रा स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रजीम तो ये है कि ये क्यों इंडिया बात नहीं करना चाह रहा? क्योंकि हम लिस्ट तो शेयर करते हैं। मुझे अगले दिन पता चला कि एम्बेसडर एजाज से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल में कोई हॉटलाइन इस वक्त मौजूद नहीं है। वो कहते हैं मैं फॉरेन सेक्रेटरी रहा हूँ, मैंने तो कभी हॉटलाइन अपने मेज पे देखी कहीं पे, ठीक है। बाकी डीजीएमओ लेवल पे है। तो क्यों इंडिया ये क्योस या अनसर्टेनिटी रखना चाहता है, या वो क्यों इस चीज़ को वो कहता है कि बात ना करें? लेकिन सुनने में आया कि न्यूक्लियर की इंस्टॉलेशंस की जो लिस्ट है वो तो एक्सचेंज होती हैं, ताकि कोई एक दूसरे पे शायद गलती से भी हमला ना करे। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया का कॉन्फिडेंस है, या कि वो समझते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ इंगेज नहीं होना, या व्हाट्स द माइंडसेट क्या है पीछे उनके? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम देखें कि 2012 में इंडिया पाकिस्तान हैड लास्ट सेक्रेटरी लेवल टॉक्स, जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स रिलेटेड चीज़ें भी डिस्कशंस हुई, लेकिन that did not succeed. Specifically, I know for the fact, like from Pakistani side, a number of nuclear security related confidence building measures were presented on the table, but none of them received any reciprocity from the Indian side on the grounds because India has sort of, limited its approach or has bind its position with with terrorism discussion. Right? India is not willing to move forward beyond terrorism related discussion, which is unfortunate because terrorism is not just India's problem, it is Pakistan's problem as well. As much grievances India has against Pakistan, Pakistan has similar grievances against India. Sirf Mumbai related, of course, there are concerns which needs to be addressed. लेकिन बात सिर्फ मुंबई या पठानकोट की नहीं है, बात समझौता एक्सप्रेस और कुलभूषण यादव के हवाले से भी होनी चाहिए, राइट? प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान सेज वी हैव कोऑपरेटेड, इंडिया सेज वी हैव कोऑपरेटेड, बट none of that cooperation can be manifested in the court of law, because whatever information India shares with Pakistan with regards to alleged Pakistan's involvement in terrorism activity, that's based on some intelligence related information which is not admissible in the courts, right? So India can claim that they have shared information, but that's not sufficient information, and then the cooperation sort of doesn't move forward. That is why we have always have the breakdown in the discussions, and we have breakdown in the cooperation as well. लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि ग्रीवेंसेस दोनों साइड्स पे हैं, लेकिन मेजॉरिटी डिमांड्स के उन ऑब्स्टिकल से हट के और उनसे notwithstanding the obstacles, countries still needs to both countries need to find ways to engage or find some innovative ways to sort of continue to engage on the different levels. जो आपने exchange of lists की बात की है, that's something both countries should take pride in, because that's one of the longest standing we may say confidence building measure. And considering how nuclear power plant, Zaporizhzhia nuclear power plant in Ukraine is under attack during Russia-Ukraine war, this element, this particular CBM has become even more important and has been presented as an example to the rest of the world that countries can have actually, this mechanism where they exchange the lists, and so that they do not sort of attack nuclear facilities. So its significance has increased way more in the context of ongoing offensive in and around Zaporizhzhia nuclear power plant in the Ukraine. But besides that, in the India-Pakistan context, I think there is much more that is needed to be done. We appreciate that this CBM exists, but that's not sufficient to ensure that peace flourishes, or that can ensure that there is no more risk on the nuclear-related stuff. So on that point of view, I think it is important to revisit ideas like strategic restraint regime, which works on three levels, three interlocking features, which includes agreed framework on nuclear and missile restraint,
conventional restraint, as well as establishing a mechanism to resolve all outstanding issues, including Kashmir and terrorism related stuff. So that's a very all encompassing proposal given by Pakistan, but which unfortunately has received no reciprocity from India, again for citing reasons that there is terrorism allegedly emanating from Pakistan, and we are at the square one, right? But the point here is that that behavior perhaps is not taking us anywhere, unfortunately, and exposing the region, it is hugely populated region, to the risk of nuclear war, advertently or inadvertently. बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बड़ा वो जिसे कहते हैं ना खतरनाक इलाका है, लेकिन दुनिया आजकल ध्यान नहीं दे रही, दुनिया अपने कामों में लगी हुई है। थैंक यू वेरी मच मैडम, बड़ा एलैबोरेट आपने एक्सप्लेन किया, हमें बड़ा मज़ा आया। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं खुद क्लास में बैठा हूँ एंड एन्जॉय कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स भी इसको देखेंगे। आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सितारा नूर साहब। थैंक यू। Thank you for having me. Thank you.